Greetings, students. I hope you are all doing well. Hi, this is Satyaki Chakraborty from Indraprastha Law College, Greater Noida, and the subject is human rights, and the topic that we're going to discuss is collective rights, and this is meant for BA-LLB for some students. So, what are collective rights? The concept of collective rights emerged because individual human rights do not guarantee adequate protection for indigenous people and other minorities exhibiting collective characteristics. So, collective rights are special sets of rights which are made for or created for indigenous or people or minorities, for a particular group, for a particular set of people, because every particular rights or every rights created for men do not provide with adequate protection and conservation. So these groups face various threats to their livelihood, to their environments, and to their health, security, and their very survival may depend upon recognition and protection of these collective rights. तो ये जो इंडिजीनियस लोग होते हैं, माइनॉरिटीज़ होते हैं, ये काफ़ी तरीके का इनसिक्योरिटीज़ फेस करते हैं, काफ़ी तरीके का थ्रेट फेस करते हैं, बी इट देयर लाइवलीहुड, बी इट अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, टू देयर हेल्थ, एंड वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम वेरियस facets of life. So, for the purpose of their survival, for their recognition and protection, collective rights are very important and very significant, because these particular collective rights are those which provide these indigenous people and minorities that security, gives them recognition and protection at the same point in time. So, collective rights include civil and political rights such as freedom of speech and freedom of torture. So, these collective rights are civil or political rights. तो ये जो कलेक्टिव राइट्स है ये सिविल और पॉलिटिकल राइट है, जो ये लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच भी देते हैं और फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर भी इंश्योर करते हैं. नॉट ओनली दे इंक्लूड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, बल्कि इकोनॉमिक सोशल राइट्स भी इससे जुड़ा हुआ है, जहाँ पे ये लोगों को हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है. Others apply to group of people such as right to healthy environment or native rights, which also falls under the purview of collective rights. So collective rights के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, collective rights बहुत तरीके का चीज़ के बारे में बात करते हैं. बी इट सिविल राइट के बारे में बात कर रहे होंगे आप, पॉलिटिकल राइट्स हो जाए, इकोनॉमिक राइट्स हो जाए, सोशल राइट्स होता है. तो हर तरीके का जो राइट्स लोगों को सौंपा जाता है, लोग को इंश्योर किया जाता है अपने सेफ्टी के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने रिकॉग्निशन के लिए, बी इट सिविल, बी इट पॉलिटिकल, बी इट सोशल, बी इट इकोनॉमिकल, और बी इट अ राइट टू लाइफ, टू प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट, सभी कलेक्टिव राइट के अंडर आता है. और ये all totally the sum of all these collective rights provides protection, recognition, and every forms of entitlement of human rights to this particular group of people itself. Collective rights guarantee the development and preservation of ethnic minorities, cultural identities, and forms of organization. A few existing legal instruments recognize these rights include Article 169 of the International Labour Organization and political constitutions of several nations including Colombia, Bolivia, Ecuador. In Colombia, for example, collective rights have been invoked in the struggles of Nukak Makuk, Yua, and Embera people. So collective rights, of course, we really focused on how collective rights tends to work. Collective rights के अंदर कौन सी rights आते हैं, ये कैसे preserve करते हैं, कैसे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेवलपमेंट करते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, कि उनका जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको रिकॉग्निशन दिया जाए, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दिया जाए. और इनके अंडर लीगल इंस्ट्रूमेंट्स भी है, जो आर्टिकल 169 ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे सेवरल नेशंस में अप्लाई हो चुका है, कि एक लीगल फ्रेमवर्क भी रहे जिसके अंडर लॉज एंड रिकमेंडेशंस होगा, जिसके तहत इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा. सो हर तरीके का राइट, हर तरीके का लीगल फॉर्म, हर तरीके का लीगल बॉडी कलेक्टिव राइट्स के अंडर में आते हैं, जहाँ पे ये माइनॉरिटीज़ को ये प्रोटेक्शन देते हैं, उनका रिकॉग्निशन देते हैं, और कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करते हैं. So collective rights over biodiversity are a result of preservation and maintenance of knowledge, innovations, and other practice based in nature. So collective rights when it comes to biodiversity, when we talk about ecological balance, or when we talk about protection of the environment itself, it also provides
or plays, sorry, rather I would say it plays a very important role or an imperative role in the preservation and maintenance of knowledge, innovations and practices based in nature. क्योंकि humans को preserve करना, minorities को recognition देना, उनको उनका cultural identity को भी preserve करना, at the same way somehow it is very much connected to the biodiversity itself, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को भी कलेक्टिव राइट्स कनेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और सहायता करते हैं कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करे. तो ये नेचर के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जाके कलेक्टिव राइट्स लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों को प्रिजर्व करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ को प्रमोट करते हैं, एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ नेचर इट्सेल्फ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कलेक्टिव राइट्स. थैंक यू.